Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear educarians. I hope you all are doing well and taking good care of yourself. From the Educators Online Support System, I am your science teacher. And today I am here to deliver the final term lesson number 4. And today our topic is unit number 6. So the material required for this lesson is lead pencil, highlighter, ruler, blue pen, blue pointer, along with your science book, with your science notebook, and also need a winter pack that has been provided by the educators. So dear students, before starting the reading of unit number 6, you all know that we have completed the reading and the notebook work of unit number 2, transport system in animals and plants. So now it's time to complete the worksheet of this unit. So now open your winter pack and come to page number 10. And here the question number 1 is, fill in the blanks. The roots of the plants absorb water and minerals from the soil. The outer circle of root cells is called epidermis. The leaves prepare food for the plants by the process of photosynthesis. In plants, water is mainly transported through the xylem vessels. The transport of sugar and other manufactured food from the leaves is called translocation. On a page number 10, the question number 2 is choose the best answer. When the body is at rest, it takes 6 seconds. Dead cells, like red blood cells, moves in a single fine line to fit through the minuscule capillaries. Plasma is the yellowish-white liquid that mainly consists of water. The process of slowly mixing of gas or a liquid in a substance is called diffusion. Red substance present in the blood that carries oxygen is hemoglobin. So dear students, on a page number 10, the question number 3 is label the structure of human heart. So firstly, we will label the right side of the heart. So the first one is aorta. Then the second part is pulmonary veins. The next part is right atrium. And the next, right ventricle. And the last part is interior vena cava. Now move on to the left side. And here the first part is pulmonary valves. Then the second part is left atrium. Then the third is aortic valve. The fourth one is left ventricle. And the last one is tricuspid valves. So dear students, you all know that we have completed the worksheet of unit number 2. So now it's time to start the unit number 6, composition of matter. And in this unit, we will discuss the structure of atom, atomic number and mass number, and also discuss the isotopes. Learning outcomes. At the end of this lesson, students will be able to describe the structure of an atom, also differentiate between atomic number and mass number, and describe isotopes and their uses. So dear students, now open your science book and come to page number 71, and here you will see the topic, the composition of matter. So firstly, you all will be write down today's task, date and day on this page. Let's start the reading. So dear students, you all know that for hundreds of years, atoms were thought to be the smallest particles. कि अगर हम 100 years पहले की बात को डिस्कस करते हैं तो उस टाइम पर एटम एक बहुत छोटा पार्टिकल कंसीडर किया जाता था. The word atom means indivisible, which we know that an atom is in fact made up of even smaller particles. The word atom का मीनिंग क्या है? इंडिविजिबल. इंडिविजिबल मीन कि जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं. तो हम ये सब जानते हैं कि एटम
बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं। इट इज मेड अप ऑफ 3 इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स। कि बहुत अगर हम 100 ईयर्स पहले की बात को डिस्कस करते हैं तो उस टाइम पर एटम बहुत छोटा पार्टिकल्स कंसीडर किया जाता था और इसकी फर्दर डिटेल हमें मालूम नहीं थी। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम साइंटिस्ट की रिसर्च के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दैट एटम इज मेड अप ऑफ 3 इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स। कि एटम्स 3 इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स पे कंसिस्ट करता है। दैट आर these are the protons, neutrons and electrons. Protons have positive charge, neutrons have no charge, so that's why we can say that it's a neutral, and electrons have negative charge. Different atoms are made up of different numbers of these 3 particles. हर एक एटम में इन तीनों पार्टिकल्स की जो डिवीजन है, जो इनके डिफरेंट नंबर्स हैं, वो डिफरेंट होते हैं। एंड एवरी एटम कंटेन्स अ न्यूक्लियस। और अगर हम एटम को फर्दर उसकी डिटेल में जाते हैं तो एटम का जो सेंट्रल पार्ट है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। एंड न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और जो न्यूक्लियस होता है एटम के सेंटर में, उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। मीन्स हमने अभी डिस्कस किया कि एटम 3 पार्टिकल्स पे कंसिस्ट करता है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। बट इन तीनों में से जो 2 पार्टिकल्स हैं लाइक प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, वो एटम के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव रैपिडली अराउंड द न्यूक्लियस। और जो इलेक्ट्रॉन, जो उसका एक पार्टिकल है, वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस की सराउंडिंग में ऑर्बिट्स होते हैं, सर्कल्स होते हैं, उसे शेल भी कहा जाता है, वो उसमें रिवॉल्व करते रहते हैं। So we can say that the protons and neutrons are about the same mass but electrons are much lighter. कि जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं उनके मैस बिल्कुल एक दूसरे के तकरीबन सेम होते हैं, बट इलेक्ट्रॉन्स के मैस एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इट्स लाइटर। सो वी कैन से दैट अगर हम नीचे टेबल को डिस्कस करते हैं, द पार्टिकल्स आर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर masses. Proton mass is 1 and their charge is plus its positive charge, and neutron mass is also the 1 and the charge is no charge. We can say that it's a neutral. And electron mass almost no mass. Electrons के हम ये कह सकते हैं कि इसका कोई mass नहीं होता, and their charge is negative charge. So you all will be highlight this point of page number 71. So dear students, on a page number 71, the another topic is mass number and atomic number. Now the question is that what is mass number and what is atomic number? So dear students, the sum of protons and neutrons in an atom is called its mass number. Means कि किसी भी एटम में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के सम अप को हम उसका mass number कहते हैं। एंड इट इज शोन विद द सिंबल A, और इसको साइंटिफिक वे में हम सिंबल A से शो करते हैं। एंड द एटॉमिक नंबर, the number of protons in an atom is called an atomic number and it is shown with the symbol Z. और एटॉमिक नंबर क्या होता है कि अगर हम एटम में जस्ट प्रोटॉन्स की नंबरिंग को कंसीडर करें तो हम उसे उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं, और इसको साइंटिफिक वे में हम सिंबल Z से शो करते हैं। सो प्यारे बच्चों, कि मैस नंबर क्या है कि अगर हम एटम में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की नंबरिंग को सम अप कर लेते हैं तो उसे हम उसका मैस नंबर कहते हैं, और इसका सिंबल है A। और एटॉमिक नंबर कि अगर हम एटम में मौजूद जस्ट प्रोटॉन्स की नंबरिंग को कंसीडर करें तो उसे हम उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं, और इसी सिंबल है इसका Z. Like helium has 2 protons and 2 neutrons, so its mass number is 4. Yes, like 2 plus 2 it's 4. An atom is presented as XZA. Here X is the symbol of an element, Z it's their atomic number, and A it's their mass number. Okay, now open your page number 72 and here is the topic is elements. Elements क्या होते हैं? So dear students, an element is a substance that is made up of only one kind of atom. Means elements वो substance हैं जो एक ही किस्म के atom से मिलकर बनते हैं. Like sodium. Sodium is made of sodium atoms only, so it is an element.
लाइक अगर हम सोडियम को कंसिडर करें, सोडियम सिंबल इज Na, तो वो सोडियम एटम से ही मिलकर बनता है, सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट्स एन एलिमेंट. Like carbon, mercury, iron, copper, etc. are all elements. So dear students, now open your page number 72 and here you all can see the table and here the elements name, their symbol, their number of protons, electrons, neutrons, their mass number, their atomic number have mentioned. So dear students, with the help of this table, you can solve these elements, number of protons, number of neutrons, electrons, atomic number and mass number. So dear students, now open your page number 73 and here the topic is isotopes. Isotopes क्या होते हैं? So when atoms of the same elements have different number of neutrons, it is said to be an isotopes. Isotopes have same atomic number but different mass number. Means isotopes वो होते हैं जिनके atomic number same हो लेकिन उनके mass number different हो, उन्हें हम isotopes कहते हैं. And isotopes have same chemicals but different physical properties. अगर हम केमिकल्स को डिस्कस करें तो आइसोटॉप्स के केमिकल सेम हैं लेकिन उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं. लाइक हियर द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन सिंबल इज H, हैज 3 नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप्स. हाइड्रोजन के नेचुरली तौर पर 3 आइसोटॉप्स एग्जिस्ट करते हैं, समटाइम्स डिनोटेड H1, H2 ड्यूट्रियम and H3 ट्राइटियम. And here the hydrogen atom have one proton. यहाँ पर जो सेंटर में आपको रेड कलर शो किया जा रहा है, this one is the nucleus of the atom. और न्यूक्लियस में हम ऑलरेडी रीडिंग में ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं. लेकिन क्योंकि ये हाइड्रोजन का फर्स्ट आइसोटॉप्स है तो फिर इसीलिए इसमें ओनली वन एटम ही एग्जिस्ट करता है और इसकी सराउंडिंग पर भी वन इलेक्ट्रॉन ही रिवॉल्व करता है. इसी तरह ड्यूट्रियम में डिस्कस करें. ड्यूट्रियम मीन 2 मीन्स कि इसके न्यूक्लियस में वन प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन और इसकी सराउंडिंग पर वन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है. ट्राइटियम, ट्राई मीन 3 मीन्स कि इसके न्यूक्लियस में 2 न्यूट्रॉन्स हैं और 1 प्रोटॉन होता है और इसकी सराउंडिंग पर भी 1 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है. सो डियर ऑल द स्टूडेंट्स, highlight these all the points of page number 73. Okay, now open your page number 73 and here the topic is uses of radiations. The first point is engineers can check oil pipes for leaks by adding radioactive substance to the oil. The second is doctors use a weak beam of gamma rays to kill cancer cells. Means कि डॉक्टर्स जो हैं वो कैंसर सेल्स को किल करने के लिए गामा रेज की जो वीक बीम्स होती हैं उनको यूज करते हैं. Plants absorb some carbon-14 atoms from the carbon dioxide in the air during the process of photosynthesis. When a plant or animal dies, it takes in no more carbon atom. The carbon-14 atom in it slowly decay. By measuring the radiation from them, the age of the dead remains can be worked out. So this is known as carbon dating. So dear students, now open your page number 73 and here there is a dialog box, remember and understand. So firstly we will solve this dialog box and the caption is fill in the blanks. The first one is N dash is the smallest particle of matter. This one is atom. Yes. An atom is made up of positively charged protons, negatively charged electrons and neutral neutrons. The number of protons in an atom is called its atomic number. The sum of the protons and neutrons in the nucleus of an atom is called its mass number. The number of protons and electrons in an atom are equal and specific. Dash are present in orbits. Orbits में क्या होते हैं? Electrons. Electrons are present in orbits or shells around the nucleus of an atom. So dear students, now open your winter pack and come to page number 8
And now we will do the question answers of unit number 6, composition of matter. And the caption is internal question answers. And the question number 1 is define atoms. Atoms क्या होते हैं? Atoms are tiny particles which are the building blocks of all substances. कि एटम ऐसे छोटे पार्टिकल्स हैं जो किसी भी सब्सटेंस के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं एंड एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर कि किसी भी मैटर के इतने छोटे पार्टिकल्स हैं कि डेट वी कांट ब्रेक डाउन कि जिनको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते एंड द वर्ड एटम मीन्स इंडिविजिबल. Question number 2 is differentiate between mass number and atomic number. The number of proton in an atom is called atomic number. Means कि अगर हम एटम में सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कंसीडर करते हैं तो उसे हम उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं एंड इट इज शोन विद द सिंबल Z और इसको सिंबल Z से शो किया जाता है. एंड द mass number, the sum of protons and neutrons in an atom is called mass number. कि अगर हम एटम में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों की नंबरिंग को एड अप कर लेते हैं तो उसे हम मैस नंबर कहते हैं एंड इट इज शोन विद द सिंबल A और इसको A सिंबल से शो किया जाता है. व्हाट इज एन एलिमेंट? An element is a substance that is made up of only one kind of atom. कि elements वो substance हैं कि जो एक ही किस्म के एटम से मिलकर बनते हैं. For example, sodium is made up of sodium atom only, so it is an element. Question number 4 is what is an isotopes? Isotopes क्या होते हैं? Isotopes have same atomic number but different mass number. So dear students, ये हम रीडिंग में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं. आइसोटॉप्स वो होते हैं कि जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो बट उनके एटॉमिक मास डिफरेंट हो, उसे हम आइसोटॉप्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल, hydrogen has three naturally occurring isotopes denoted as H1, H2. H2 mean deuterium and H3 mean tritium. Next, the question number 5 is define valency. The combining capacity of an element with other element is called valency. कि मीन्स कि वो कंबाइनिंग कैपेसिटी किसी भी एलिमेंट की जो दूसरे एलिमेंट को कंबाइन करता है, उसको अपने साथ अटैच कर लेता है, उस कैपेसिटी को हम उसकी वैलेंसी कहते हैं. फॉर एग्जांपल, वैलेंसी ऑफ क्लोरीन Cl इज द शॉर्ट फॉर्म, इट्स देयर सिंबल इज 1 एंड द ऑक्सीजन O is 2. So dear students, now it's time for your notebook work. So before starting this, first of all, you all will be write down index page serial number 2. And the serial number 2 is unit number 6, composition of matter. So dear students, now it's time to prepare the title page of unit number 6. So firstly write the unit number 6, composition of matter. Then write the content, and the content are reading, internal objective on book, question number 1 till 8 on notebook. After that, on a blank page, draw the structure of atom like this. Okay, now students, firstly write today's task, date and day on this page. Then write the topic. Topic is unit number 6, composition of matter. Then write the caption, internal question answers from page number 71 till 77. And here the question number 1 is define atom. Then write its answer. After that, write the question number 2. And the question number 2 is differentiate between mass number and atomic number. Then write its answer like this. Okay, now write the question number 3. What is an element? Then write its answer. After that, write the question number 4. What is an isotopes? Write its answer. Then write the question number 5. Define valency. Then write its answer. So dear students, you all will be write down these question answers on your science notebook with neat handwriting. So dear students, now it's time for your today's task. And in this task, what you have to do? So firstly learn and do worksheet of unit number 2.
Then learn highlighted points of page number 71 till 73 and also learn and write question number 1 till 5 of unit number 6 on notebook. So dear students, I hope today's lesson was helpful for you and you all have understood all the points carefully. So take care of yourself. See you soon inshallah. Till then, Allah Hafiz.